everyone. My name is Rajni Saxena, your spoken English coach. Now, those who wish to continue their spoken English journey are advised to get registered in our 90 days program. Okay, I'll give you a brief information. What exactly are you going to get in our paid courses? Here's a brief information. First of all, it's a 90-day program, 3 months program, and the sessions will be from Monday to Friday. Okay, Saturday, Sunday will be week off. Every day it will be 1 hour live classes. Daily it will be an interactive session where I will be explaining, and simultaneously along with me, you will also start practicing. As I'm teaching, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, immediately I'll give you the things like you can start creating your sentences. Okay, so the practice session will begin from the very first day. Then we will have regular revisions. Regular revisions is important. Like first, once we start with the session, previously whatever we had, the previous day जो भी हमने पढ़ा है, initially for 15 minutes we'll have a revision, and then after 15 minutes, in case if you have some doubts, the next day we can clarify. पहले 15 मिनट वो doubt sessions रहेगा, and then afterwards we'll start with the regular practices. Every day it will be a teaching session. Recordings, of course, will be available in case if somebody is absent for some or the other reason. Definitely, every day the recorded sessions will be uploaded in the group. Daily study material will also be provided. Daily, because you will be practicing, and then I'll give you some assignments and the practice session, and then daily study material will also be provided. Then the most important part is the weekly exam. Okay, every week we are going to conduct the exam from Monday to Friday, whatever we are learning. Monday to Friday we have classes, out of which Monday to Thursday, whatever we have learned, Friday we'll have the exam session. Weekly test to track your progress. See, we will be having classes from Monday to Friday, out of which whatever we have learned from Monday to Thursday, Friday we will have a weekly test. Weekly test is important to give you a self-analysis, right? After the exam, you understand that okay, कितना और progress करना बाकी है, कहाँ पे आपके doubts अभी भी हैं. So the exam is really important. बहुत important part होता है because it is helpful to give you a self-analysis. This exam is for you. So every week we'll conduct the exam. Then 100% it will be a live doubt sessions. ठीक है, live in the class itself, because we all are going to communicate with each other. तो इतने इस 100% live doubt support रहेगा. Every day आपके doubts clarify किए जाएंगे. Completely interactive session रहेगा. Real time conversations होंगे. Daily assignments, of course, is important. If I'm teaching you something every day, I'll give you some assignment to practice, and then next day you will come up with your doubts. जो भी आपके doubts है, जो कि हम next day डिस्कस करेंगे. ग्रुप डिस्कशन स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए रेगुलर होने वाला है. Alright, the method what I am going to use here. See, if you want to speak just like me, you have to follow the things what I have learned. Okay, this is the method which I am using. The way I learned, the same method I am going to teach you, so that your fluency should be exactly like me. This is the method which I have personally practiced during my spoken English journey. We are not teaching you randomly picking certain books from the market, certain grammar books, and then we have started teaching. No. If you want to achieve the fluency level, you have to practice the same. You have to use the same method which I have used, and then I can guarantee you fluent English within a span of 60 days. Alright, so after 90 days of classes, you will get an application where you can connect with all the real students. देखिए क्लास में obviously we are practicing with real people. आप दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, and then this helps you start with new topics. Classes में हम क्या करेंगे? With the help of idioms and phrases, we are going to talk to each other. Once this session is done, still you need someone to talk to. You cannot practice standing in front of the mirror, है ना? आप अपने आप से कितनी बात कर लोगे? You need some real people to talk to. So this application, and the best part is you can
log in anytime, and this is completely free. You don't have to pay even a single penny, right? You can talk to the real people, practice every day on an everyday basis. When you talk to the real people, you will come up with, new topics. So if I'm talking to you, I'm explaining you how my day was, or how my throughout the day, what experiences I have faced. The other person will also tell their story. So you will come up with new words. Alright, so this is how your vocabulary will also increase. So this application is really helpful. And the best part is, you can log in anytime as per your convenience. When it comes to application, the best part is, it's not like restricted to some timeline कि ऐसा नहीं है कि 9 to 10 की ही हमें classes करनी है. It's like any time throughout the day, as per your convenience, you can log in. So this is what you're going to get. Additionally, course complete. Once you complete the course, you will get course completion certificate. Okay, there's a certificate which will be awarded to each and every student, 100%, and then lifetime study material. Then recently we have come up with the placement support. We have tied up with the best placement agencies in Pune as well as Mumbai, but they provide pan-India services. Their services are available pan-India. So the placement support is also available pan-India. Additionally, we are going to provide you with the interview preparations. And mock interviews will also be conducted. Interview preparation is again important. See, irrespective of what background you are, आप चाहे engineering के लिए apply कर रहे हो for software engineer or automobile sector, or if you are applying for service sectors, or if you are looking for the job in the manufacturing sectors. So irrespective of what field you are applying, there are certain set of questions which are generally asked in most of the companies. Okay, so because we are in touch with the placement, we will help you with these interview preparations and interview etiquettes and the body language as well. Okay, and then what are the points which you should mention in the resume. So we are going to guide you through the entire process. A proper professional resume आपको कैसे बनाना है, what are the things you should mention, freshers को कैसा resume बनाना है, experienced person का resume कैसा दिखना चाहिए, everything will be covered. We'll help you with the resume preparation, because that is the first step. पहले आपका resume selection होगा. Second, you will be called for the interview. So the second step, when you are appearing for the interview, so what should be your body language? Is your presentation. So we'll be teaching you with the body language and the interview etiquettes. Then the third will come your spoken English, of course. So once you start the interaction, then what are the basic questions which most of the companies will ask? See, you must be from different background. It doesn't matter. There are a couple of set of questions which every company will definitely ask. Okay, so we will prepare you with all those basic questions so that initial 5-7 minutes का जो interview है वो इतना अच्छा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए that 50% of your chances, like it will increase your chances of getting selected to 70 to 80%. When it comes to the technical part, that is something which you have to prepare on your own. Like if you are from an automobile section or IT, if you have some Java questions technically you are good. सब लोग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं. सिर्फ जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, दे आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, वो कहीं ना कहीं लैक हो रहे हैं. So the initial thing is what we are going to prepare you with. This interview, this mock interview and interview preparation has really helped a lot of freshers crack their first interview. So that is what you are going to get. Apart from this, since we are basically into digital marketing, definitely I will teach you the most important AI tools. See, we are not charging anything additionally for the AI tools, right? See, every company, चाहे वो 10 employee, every company, चाहे वो बहुत छोटा 10 employee की company हो या 10,000 employees की company हो, letter writing is something everywhere it is needed. So I'll be teaching you on the letter writing, email drafting, presentations. AI tools are really important. So this is something which I'll be explaining you and I'll be teaching you additionally. Okay, apart from this, we are covering the business vocabulary.
We are going to start teaching you from the basics, day-to-day vocabulary, and then we have covered the business vocabulary as well. Okay, so this is all about the 90-day PAGE program. इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है during the course and after the course, what are the things which SS Academy is offering. Now I'll talk about the fee structure. We have two different kind of PAGE programs. One is like live classes. If you are looking for the live classes where we both will be interacting, I mean the student and me, both of us will be interacting, and it will be completely a live session with two-way interaction. Then the second category is the recorded sessions. We are also providing the recorded sessions. The reason is a lot of students, they faced issues with the timings. जिन्हें टाइम को लेकर इशू है, for example they said 9 to 10, it's not possible because they are working or they have some or the other work, they remain occupied. तो उनके लिए we have come up with the recorded session. Recorded sessions क्या है? This is similar to the लाइव सेशन, बट सिर्फ इतना है कि यू कैन नॉट इंटरैक्ट विथ मी बिकॉज ये रिकॉर्डेड सेशन है, बट वो रिकॉर्डिंग्स जो क्लासेस की हुई है, एक्चुअल लाइव क्लासेस की हुई आपको एवरीडे बेसिस पे आपके ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी. एंड फॉर द रिकॉर्डेड सेशंस, इन केस इफ दे हैव डाउट, वीकली वी हैव वन डे, लाइक सैटरडे हमारा एक दिन होता है लाइक रिकॉर्डेड जो सेशंस ले रहे हैं, जिन्होंने रिकॉर्डेड वाले प्रोग्राम्स में लिया है, वो अपने डाउट सैटरडे को क्लियर कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? यू विल आस्क मी कि रिकॉर्डेड सेशंस फिर व्हाई शुड वी परचेज फ्रॉम एसएस एकेडमी और फ्रॉम यू, बिकॉज वी हैव एन नंबर ऑफ यूट्यूब वीडियोस. सो द डिफरेंस इज इन द यूट्यूब वीडियोस आप बिल्कुल रैंडम कोई भी चीज उठा के देखोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको मैथ पढ़ा रही हूँ, so first I should teach you numbers 1 2 3 4 and all, and then I'll teach you plus minus and all this subtraction, okay, addition, subtraction, multiplication, division. That is the second step. First I'll teach you the numbers 1 2 3 4 and all. What if अगर आपको पहले मैं प्लस पढ़ाना शुरू कर दूं and then I'll come back to this, so you know this will create confusion. You cannot directly learn 100 plus 200. You will say what is this 100 and what is 200? Plus तो समझ में आ रहा है, but where these numbers have come from? So there's a step फॉलो करना पड़ेगा आपको प्रॉपर स्टेप में. तो यहाँ पे वी विल प्रोवाइड यू डे वाइज कौन सा स्टेप आपको किसके बाद में फॉलो करना है. तो इसलिए रिकॉर्डेड सेशंस, ये डिफरेंस है. आप रैंडम यूट्यूब वीडियोस से जो पढ़ोगे वो सीक्वेंस में नहीं होगा. विल गिव यू सीक्वेंस वाइज रिकॉर्डेड सेशंस, एंड रिकॉर्डेड सेशंस के लिए वन डे in a week will be your doubt solving sessions. वहां पर भी आपको डेली के असाइनमेंट्स मिलेंगे. This is as good as our regular classes. The only thing is जिनको टाइमिंग का इशू है दे विल गो विद द रिकॉर्डेड सेशंस. दोनों की भी फी स्ट्रक्चर डिफरेंट है. फॉर द लाइव सेशन इट्स 5000 फॉर द एंटायर 90 days, out of which you will pay in installment. Monthly you will pay 2500. Next month you will pay 2500. Okay, so 5000 is for the live interactive sessions and 2999 is for the recorded sessions. That is the fees which we have decided for the recorded sessions. Okay, so and still I have tried to cover everything, and trust me, the method which we are using here is the same method which I used for myself, and the same thing I am offering you. We are not teaching you from the random books, market से book लेकर आ गए हैं grammar की and I'm teaching you. No, I'm not doing that. This is the method जो कि which I have personally used. This method से हमने पढ़ा है, and the vocabulary whatever we have learned, everything will be provided. So this course is not only for the students, it's for the professionals as well, working professionals as well. Okay, and here that's why considering, because we know ज्यादातर working professionals ही हमारे students हैं. Because of them we have come up with all these additional things जिसमें हम AI भी पढ़ा रहे हैं, placement support भी दे रहे हैं, interview etiquettes भी करवा रहे हैं. That's the reason it's a one-stop solution. You're not only learning English, you'll be learning a lot of things, additional things, and then AI support सब कुछ आपको रहेगा. Hope I have answered to all your questions. Still, in case if you have more questions, do not hesitate to reach me out on my number, or you can message me on my WhatsApp number 84464288.
5 साल से काम कर रही होगी, बोलो। She will have been working She will here have been working for 5 years here for by the 5 next month. years, 5 years by By the next month. next month। ठीक है, ये आगे पीछे हो जाएगा सीक्वेंस। शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 इयर्स बाय नेक्स्ट मंथ, है ना। 1 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे। We will have been वी विल हैव बीन वेटिंग। waiting किसके लिए वेट कर रहे हैं? फॉर द be- बस। for for the bus. की नहीं बन रहा है। यस मैम, वो हेड वाला जो मैंने बनाया था ना, उसमें मैं इसलिए कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि सेंटेंस ना मेरा आगे पीछे बन रहा था, तो मैं श्योर नहीं थी कि ये मैं सही लिख रही हूँ या गलत है। अच्छा अच्छा, इट वॉज जस्ट फॉर द सीक्वेंस, अदरवाइज एवरीथिंग एग्जाम्पल्स। आप लोग मुझे हिंदी एग्जाम्पल्स, तो एक मुझे सिंपल फ्यूचर का एक एग्जाम्पल बोलो। सिंपल फ्यूचर कोई भी एक एग्जाम्पल बनाओ। ऐसे करेंगे तो आपके मैं खा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके मैम, मैं खाना खाऊंगी। मैं खाना खाऊंगी। खाऊंगी, सिंपल यस मैम। है ना। ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर। अब फ्यूचर कंटिन्यूस का एक एग्जाम्पल बनाओ, जो फ्यूचर में आपका काम चल ही रहा होगा। यस मैम, खाना खाने के बाद मैं वॉक कर रही होंगी हाँ, मैं उसको उस पचाने के वक्त लिए। मैं उस वक्त हाँ पचा रहे होंगे। मैं उस वक्त खाना पचा रहे होंगे। मैं उस वक्त वॉक कर यस रही मैम। होंगी होंगी ठीक है। अब मुझे बना के बताओ यस मैम। देवो, तुम्हारा टर्न। फ्यूचर परफेक्ट, इसके आगे का बात बताओ अभी तुम, बोलो देवो क्या बनेगा इसका। मेरा खाना पच चुका होगा, यही है ना। मेरा खाना डाइजेस्ट हो चुका होगा। इसी की कहानी को हम पूरा करते हैं। अब ये काम क्या हुआ, फ्यूचर में कंप्लीट हो गया। परफेक्ट क्या है आपका, टास्क विच इज डन। अब चौथा एग्जाम्पल बनाओ कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, अब बताओ कैसे बनेगा। मैं, अगर मैं बोलूं मैं 2 घंटे से खाना डाइजेस्ट कर रही होंगी, यस मैम। है ना। क्या डिफरेंस दिख रहे हैं अभी, चलो आप लोग मुझे डिफरेंस बताओ, क्या समझ में आए चारों भी टेंस के डिफरेंस। सिंपली मैं खाना खाऊंगी, यहाँ पे आपकी क्रिया चल रही है फ्यूचर में, आप उस वक्त वॉक कर रही होंगी। मैं क्या करूँगी, उस वक्त मेरा वॉकिंग चल रहा होगा, सिर्फ कंटिन्यूस लगा। यहाँ पे डन हो गया, कोई तो भी एक क्रिया खत्म हो गई, तो हमने क्या बोला, फ्यूचर में डाइजेस्ट। लेकिन बात तो होगा, एंडिंग क्या होगा, होगी 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 में ही होगी आपकी एंडिंग, है ना। फ्यूचर है, ऑब्वियसली एवरीथिंग होंगी होगी ऐसे ही जाएगा ना। यहाँ आप बोलोगे मैं यस मैम। खाऊंगी, यहाँ बोल रही हो मैं खा कर वॉक कर रही होंगी, यहाँ आप बोलोगे कि हाँ मेरा खाना जो है डाइजेस्ट हो चुका होगा। चुका होगा यही था अपना, इसी यस को मैम। एंडिंग। और अब चौथे में हम क्या बोल रहे हैं कि मैं वो काम आपका शुरू, इसमें ऐड किया एडिशनल इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडेड, कि द टास्क वाज स्टार्टेड समटाइम्स बैक, लाइक डाइजेस्ट कर रही होंगी, डाइजेस्ट हो चुका होगा। नाउ हियर अगेन ये डाइजेस्ट हो नहीं चुका, इट्स अगेन कर रही होंगी। दिस वन वॉक कर रही होंगी, वैसे ही डाइजेस्ट कर रही होंगी, बट कंटिन्यूस के आगे यहाँ पे वी हैव एडेड मोर ड्यूरेशन। 2 घंटे से मैं डाइजेस्ट कर रही होंगी। दिस इज हाउ, दिस इज द। मैं भुगतान करता आ रहा हूँ। I have been paying. वेरी गुड।
मैं रोया था, सिंपल पास्ट में बनाओ। I cried. आई क्राइड, वेरी गुड। मैं लिखता आ रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस। I have been writing. आई हैव बीन राइटिंग, वेरी गुड। सिंपल पास्ट बनाना है, मैंने काटा, I cut. आई कट, है ना, वेरी गुड। मैंने देखा है, I have looked. आई हैव लुक्ड, है ना। आई हैव सीन भी चलेगा, बट that's the reason I have already mentioned the verb so that you don't get confused what verb to be used. I have looked, I have seen, ठीक। मैं रोक चुका होऊंगा, फ्यूचर में परफेक्ट। I will have stopped. मैंने धक्का दिया था, मैंने धक्का दिया था, I pushed. पुश्ड, वेरी गुड। फ्यूचर में परफेक्ट, मैं उठा चुका होऊंगा, फ्यूचर में परफेक्ट, I will have यस। lift. थर्ड फॉर्म ऑफ लिफ्ट, Left. लिफ्टेड, लिफ्टेड ईडी, ओनली ईडी, लिफ्टेड, ठीक है। आई विल हैव लिफ्टेड, लिफ्टेड उठाने के लिए है, लेफ्ट मतलब छोड़ के जाना, है ना। Okay, ma'am. ओके, नाउ मैं उबाल चुकी हूँ, उबाल चुकी हूँ, present perfect. हम्म। I have boiled. वेरी गुड। आई हैव मनाया था, सेलिब्रेट किया था, सिंपल पास्ट। सेलिब्रेट का सेकंड फॉर्म क्या आएगा आई के साथ में, आई, I celebrated. ओ सॉरी, हाँ मैं I पास्ट had. परफेक्ट को सिंपल पास्ट समझ रही हूँ, पास्ट परफेक्ट, तो आई I had celebrated. had celebrated, हाँ, and then I celebrated, पूनम, that is also correct. if it is simple past, अगर मैं बोलूँगी कि मैंने यहाँ जो लिखा है this is simple past, मैंने celebrate किया था तो I celebrated, and मैं celebrate कर चुका था, then I had celebrated, very good. Batch September 2025, as you can see my screen, altogether we had 13 students here. Now I'll show, look at the date, it was 9th of September. Here 9th of September she made the first payment 2500. The second payment date was 15th of October. Alright, the second payment was done on 15th of October. Now you look at the receipt what I have shared, it's completely, the payment balance payment is nil, 5000, that is the total. Look at the other members. Pallavi, I'll show you this, Ganesh. The date was again 9th of September, where he made partial payment installment 2500. 2500 is still pending, total fees is 5000 rupees. Now this was the payment which was done. Look at the date, it was done on 10th of October. The remaining 2500 was done, and against this I have shared on 10th of October. Look at this, the receipt dated 10th of October, where complete payment is done, total amount paid is 5000 and the balance is completely nil. Yeah, another student from the same batch, Tushar Shende, the remaining balance 11th of September. Alright, your remaining amount he cleared on 11th of September. Here is another example from the same batch, Yashasvi. Now look at the payment transactions. So this was the first transaction she did, and this was the second transaction. The second installment was done on 9th of December, and against that she has received the receipt. Now 4000 paid, 1000 balance. The invoice is dated 9th of December. Alright, so this is how you can make the remaining payments in installment. Yeah, this is how you can pay in installment. 2500, 5000 is the total fees amount and 2500 is the monthly fees.
so you can pay in 2 installments. Trust me guys, a lot of students वो लोग मुझे बोलते हैं कि the fee structure is really high. बाकी का इंस्टीट्यूट्स में 500 में 1500 में 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने पढ़ा रहे हैं. बट ट्रस्ट मी, देखिए पहले तो हम ऐसे छोटा अमाउंट बता के वन शॉट में पेमेंट नहीं लेते, क्योंकि अगर एक छोटा अमाउंट आपने दे भी दिया एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड तो फिर दिस इज़ ऑल्सो योर कंप्लीट मनी इज़ वेस्टेड. भले ही वो 500 रुपये हो या आपके 50 रुपये में कोई पढ़ा रहा है, ठीक है. द एंटायर अमाउंट इज़ वेस्टेड एज वेल एज योर ड्यूरेशन, योर टाइम इज़ ऑल्सो वेस्टेड, राइट. हम सोचते हैं कि 4 मंथ की मैंने 500 में क्लास लगा ली है 4 महीने, बट यू आर एक्चुअली नॉट ओनली वेस्टिंग योर मनी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑल्सो. टाइम इज़ ऑल्सो इक्वली प्रीशियस, राइट. सही जगह इन्वेस्ट कीजिए. मैंने आपको लाइव एग्जांपल्स दिखाए हैं. अगर मैं बड़े बड़े प्रोमिसेस करके, झूठे प्रोमिसेस करके पैसे अगर एक बार ले भी लूँ, 2500 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कोई पे कर भी दे, तो वाई विल एनीबडी पे बी द सेकेंड इंस्टॉलमेंट. दूसरी बार वो मुझे 2500 नहीं देंगे, right, unless and until they are getting benefited. And I have just shown you all my students, they are paying the second installment and then without even sending them reminders, ठीक है, स्टिल दे आर पेइंग. तो क्यों पे कर रहे हैं? बिकॉज दे आर गेटिंग बेनिफिटेड एंड दे नो कि इट्स वर्थ पेइंग. जहाँ पे वर्थ है वहाँ पे करने में किसी को तकलीफ़ नहीं होती है, ठीक है. मैं भी बोल सकती हूँ कि 500 में मैं आपको पूरा 90 डेज़ पढ़ा दूँगी एंड देन एक साथ आपसे पैसे ले लूँ एंड देन इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कोर्स, व्हाट विल यू डू? बिकॉज आई हैव टेकन द एंटायर अमाउंट, देयर इज़ नो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी, राइट. सो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी हमने दी है बिकॉज वी नो व्हाट वी आर डिलीवरिंग